ओके, सो मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देने वाली हूँ और आपको सिंपली so let's just felicitate her. And for that, I would like to call upon the stage. Okay. So first off, thank you so much, Hina, for coming and taking out time from you. I think thank you everyone for being here. It means a lot. And thank you, Hina, for really putting stars into our whole. I think what I see is our journey of how we went into getting jewelry accessible across for everyone. I think that resonates a lot with the spirit you have also shown and showing and representing us in international forums. I think it's a great moment for us to be here. I would love to. Everyone is, I think, they're bored with me. I think yeah. आते हुए चेहरे सारे मेरे सामने हैं. Everyone's smiling. Thank you so much, Anirudh. Thank you to the entire team, the Jiva family. Thank you so much for having me here. And it's a pleasure. It's an honor to be here to inaugurate one of your stores. And I am so happy and I was so happy when I got to know that you have 100 stores across India, like 100 stores across India. That's a big number in such a short span of time, right? Congratulations to the entire Jiva family. I mean, 100 store इतनी जल्दी बाबा बहुत बड़ा number होता है. And मैं अभी अंदर गई पहली बार and I had a good time. बहुत अच्छे hi baby. बहुत अच्छे designs हैं. I love them. I'm wearing a Jiva design right now. How do you find this, ladies? Wow. It changes design also according to the shade of your hair, right? And then you can press it or you can मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आप देख स्पेशली ऐसे जैसे आप रिपोर्टिंग करते हैं या ऑफिस वेयर ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट, हल्की सी डिटेलिंग और बहुत प्यारी है, बड़ी कंफर्टेबल है. मैंने 2-4 पीसेस पसंद भी किए हैं. शॉपिंग भी करनी है साथ साथ. पुणे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ का खाना एंड द लवली ईटिंग प्लेसेस, ईटिंग जॉइंट्स हियर इन पुणे. तो पुणे इज़ लाइक
घर ही है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी औरत है जो ज्वेलरी से लगाव नहीं है, आप मुझे ये बताइए पहले। नहीं, आई लाइक ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरी। आई थिंक ज्वेलरी का ऐसे कोई आपको टेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह के आपने आउटफिट पहने हैं उस पर क्या जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, यू नो। कभी कभी आप साड़ी पहनते हैं, उसके साथ टेम्पल ज्वेलरी गोल्ड बहुत प्यारी लगती है, एकदम ट्रेडिशनल। या फिर आपने गाउन वगैरह पहना है तो उसके साथ मॉडर्न ज्वेलरी या फिर स्टोन्स, रूबीज़, एमरल्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स आपने क्या पहना है। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ एवरीथिंग है। इनफैक्ट अभी मैं इनको अनिरुद्ध को बोल रही थी आपके पास मंगलसूत्र भी है। मतलब दैट्स अमेजिंग। एंड लुक एट देयर कलेक्शन ऑल्सो, कितनी जल्दी इन्होंने प्रोग्रेस किया है इतने कम टाइम में। इंडिया के अंदर इनके 100 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, विच इज़ अमेजिंग। और आज वन मोर मुझे 2-3 पसंद आए, मैंने अनिरुद्ध को दिखाया भी। मुझे हाँ, सिलेक्ट करके रखा है मैंने। अच्छे हैं, नहीं जेन्युइनली ना, ऐसे कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए या फिर ऑफिस वेयर या डेली वेयर की बहुत ही अच्छी कलेक्शन है, बहुत ही प्यारी। चुभे ना है कि नहीं, बताओ। देखो, आई थिंक मेरे मॉम डैड ने मुझे इयररिंग्स मतलब ऐसे स्टड्स गिफ्ट किए थे जब मेरे कान पियर्स किए थे उन्होंने। तो ऐसे सोने के बाली नहीं होती है, सबसे पहले आप वही देते हो अपने बच्चों को, पहनाते हो। So I think our journey has been always first on innovation, right? Take it from the whole point of making jewelry affordable and giving the brand. So there are 2-3 tenets. One is product innovation. We have the best in terms of the products, in terms of accessibility, the design. We are known for our intricate designs. We are known for actually making daily wear affordable, jewelry affordable. Now you stylish, and you don't need to go buy a gold jewelry and put it in the locker, right? The idea is that you as a office going can change your jewelry every 3-4 months. You can buy multiple pieces in a year and actually try on different outfit. You have one wear for your beach wear, you have one for your brunch, one for your night wear, right? So it's always a different occasion. You can buy multiple pieces. I think yes. So Pune actually is a very important city for us. We have more than 15 stores in Pune itself. Wow. And this is our 120th store pan-India. Wow. Right? It's a unique design. So I think if you go around the store, there would be one Hina tried, the supple bracelet, right? It is a product which can become a ring and a bracelet. Right? So there are multiple such products which have multiple utility. There are pieces where, as you said, Mangalsutra, it doesn't need to be the boring Mangalsutra. It can be stylish. It can be stylish. We still have the beads. We still have that traditional essence, but it is stylish. Yes. So अभी श्रीलंका में हमने just recently open किया and we are seeing amazing success. Idea is yes. We will continue to multiple countries across Southeast Asia and Middle East first. In India itself, our plan is to reach 250 plus stores within the next 9 months. And we were, yes, obviously initially as an affordable brand, we started with silver jewelry. But in the last 5 months, we have actually launched gold and lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds as a category has been amazing for us. The kind of push even seen by all the government into lab-grown and the kind of pricing, we are seeing that obviously people are getting educated more. They are finding it. जो आपको diamond same 3 लाख में मिलता है, वो आपको 50,000 में मिल जाएगा. What is the minimum cost and maximum? So our range of lab-grown starts from 5,000-6,000 gold and lab-grown diamonds and goes up to 30,000-35,000.